Uh, Actually, I am indebted to His Grace Harikirtan Prabhu and Sridham Prabhu, both of them who introduced me to Guru Maharaj. It was in 2015, 15 May summer. So Guru Maharaj came to Mayapur to, I don't know what was the event, but Maharaj came to Hyderabad, Mayapur. So to Sriram Prabhu's house. So तो मैं बहुत आभारी हूँ श्री राम प्रभु का और Harikirtan. हरि कीर्तन प्रभु का कि उन्होंने मुझे महाराज से मिलने का मौका दिया। महाराज आए थे मियापुर में। So then actually there was one book called Make Vrindavan Villages, which Maharaj actually, I got it signed with Maharaj. So Maharaj signed and gave it to me. तो एक महाराज का एक पुस्तक है मेक वृंदावन विलेजेस, तो वो महाराज ने उस पर हस्ताक्षर करके मुझे दिया था वो पुस्तक। Yes. So till that point I was just chanting, but then when I started reading this book, somehow I never read any books before that much, but this was a small thin book, so I started reading it. तो उसके पहले तो मैं सिर्फ नाम जपा करता था, पर उसके बाद मैंने ये पुस्तक पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मैं पुस्तक ज़्यादा पढ़ता नहीं था, पर जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया So in that book, there was an interview between Harikirtan Prabhu and Guru Maharaj, where Maharaj mentions it is high time we have to establish Varnashrama. It's been, Prabhupada told this in 1970s itself. तो उसमें हरि कीर्तन प्रभु और गुरु महाराज के बीच में एक वार्तालाप था, जहाँ पे महाराज ने कहा था कि अब समय हो चुका है कि हमें वर्णाश्रम की स्थापना करनी चाहिए। And Maharaj says, it is very late and it's already 2003. That statement was there. And I was reading that in 2016. तो उसमें लिखा था कि बहुत देर हो चुकी है और अब 2003 साल भी हो चुका है, और मैं ये पढ़ रहा था 2016 साल में। So somehow that day I was like, I was feeling, oh, it's been already 13 years. That statement was already given by Maharaj. What can we do now? तो मैं सोच रहा था कि 13 साल हो गए ये महाराज ने ये बात कही 13 साल पहले, तो अब हम क्या कर सकते हैं। Now it's been 6 years or 7 years. I couldn't do much. But when I see these Gurukul boys, definitely I'm sure Maharaj, whatever, I can't say that as a worry, but whatever your concern is there, definitely these Gurukul boys will fulfill. We have lot of hopes on this Gurukul system. I'm very, I really want to appreciate from my heart, bottom of my heart, all the principals and Gurukul teachers and the Gurukul students. I just spent some time with these Gurukul boys. Really they are amazing. तो अब महाराज की सेवा करते हुए 6-7 साल तो मुझे हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ मैं कर सका, पर जब इन गुरुकुल के छात्रों को मैं देखता हूँ तो मुझे इस बात की आशा एकदम से आ जाती है कि ये अब महाराज के सपने को आगे लेके जाएंगे। Definitely. So Prabhu ji was mentioning that Maharaj instructed to establish 10,108. So imagine 10 years after this, there will be crores of Gurukul students coming from there. 10,108 is a very huge number, right? So there will be crores of devotees every year coming out of from Gurukuls. If you ask me, they are like nectarian drops. If they interact with city, it's like putting those drops into a salted ocean. तो अब एक भक्त ने कहा था कि हमारा सपना है कि हम महाराज के लिए 10,108 गुरुकुल बनाएंगे। तो आप सोचिए कि इन गुरुकुलों से कितने करोड़ करोड़ छात्र यहाँ पे आएंगे, और मैं तो कहता हूँ एक एक छात्र एक अमृत की बूंद के समान है, और अगर हम इन छात्रों को जाके किसी शहर में रखते हैं तो ऐसा मानो कि हम अमृत को एक नमकीन सागर में डाल रहे हैं। Actually, I will interrupt a little bit here, just to mention that one of the most Amshu, actually Sriram Prabhu mentioned Amshu, nobody knows what Amshu is, but Anantha Tirtha Prabhu has been especially focusing on reviving the traditional technology of
weaving, of growing actually from the hands of devotees, cotton, original cotton seeds, and the whole process. He can spend hours actually talking about it. We don't have hours. But recently, Gurukul boys visited Kamyavan, and he was amazed. Actually, I was also amazed. Within 1 or 2 days, he trained some of these Gurukul boys to actually make some thread. Isn't it? You can mention it a little bit after you translate. तो यहाँ पे मैं आप सबसे अंशु के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये प्रभु जी इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये इसमें हम सबको सिखाते हैं कि कैसे अपने हाथों से कपास का धागा बना सके। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमने जब गुरुकुल के छात्रों को सिखाया तो इन्होंने 1 या 2 दिन में ही ये कला सीख ली। We should have a demonstration tomorrow for everyone. Yeah. तो हम कल सबको हम ये करके दिखाएंगे। Most of us, myself included, I actually did not know that traditionally actual brahmanas would make their own Brahman thread. They would never purchase, they would make their own. तो मुझे भी ये पता नहीं था कि जो वास्तविक ब्राह्मण होते थे वो कभी अपना धागा खरीदते नहीं थे, वो अपना धागा खुद बनाते थे। Yeah, so maybe you can briefly mention about that experience. Hare Krishna. So there is one student here, Krishna Chaitanya. तो यहाँ पे एक छात्र है कृष्ण चैतन्य। He is sleeping. थक गया है। तो वो अभी सो रहे हैं। कोई बात नहीं। तो वो कृष्ण चैतन्य आज सुबह मिला और बोला था कि महाराज ने कोई बात English. महाराज ने मुझे सॉरी या सो he told me that कृष्ण चैतन्य तो ये है कृष्ण चैतन्य। तो he was mentioning that Maharaj asked me to make this thread. He will wear the Brahmin thread made by Krishna Chaitanya. See how fortunate this boy is. So soon we will be training many devotees in this. One day we will grow cotton. These kids will make yarn and they also weave and dye with natural colors and give it to Maharaj. Maybe next Vyaspuja. तो देखिए ये छात्र कृष्ण चैतन्य, महाराज की कितनी बड़ी कृपा है इन पे। इन्होंने कहा कि इनके हाथों से जो जनेऊ का धागा बनाएंगे वही महाराज पहनेंगे। और हमारी ये भी परिकल्पना है कि अभी इन छात्रों के ही हाथों से हम एक जो धागा है उससे हम महाराज के लिए वस्त्र भी तैयार करेंगे और अगले व्यास पूजा में हम महाराज की ये भेंट करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। One last point. So we have to, there should be a very strong plan to engage these kids. That's what I meant actually. So crores of devotees will be coming and again they should not go to cities in search of some jobs. So there should be a very strong plan to engage them so that the depth of ISKCON will increase and it will become more stable and independent of the modern economy. तो हमारी परिकल्पना ये है कि इन छात्रों के लिए हमेशा हम इन्हें कुछ करने के लिए दे सके ताकि इनको शहरों में जाके अपने पालन पोषण की चिंता ना करनी पड़े। हरि बोल, हरि बोल। अंशु चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Jai Sri Prabhupada. So I'd like to begin by thanking
all the devotees who have come from different places to be present here in Sridham Mayapur for this event and ceremony today. तो पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा हर एक भक्त को जो अलग अलग जगहों से आए हैं इस अनुष्ठान में. Especially I'm very thankful that by Krishna's mercy we have a very good presence of our Gurukul boys from different places here in India. और एक आभार इस बात का भी है कि यहाँ पे भारत के अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे गुरुकुल के छात्र भी उपस्थित हैं. I was just sharing with a devotee, I believe yesterday, just like in a family. In a family, if there are no children, that house is like empty, तो कल मैं without life, lifeless. Yes. तो कल मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था कि जैसे एक घर में अगर बच्चे ना हो तो वो घर एकदम सूना एकदम बेजान लगता है. Yes, according to Vedic culture, actually marriage primarily is to have progeny, to bring forth good souls who will actually become devotees of the Lord. Yeah. तो हमारे वैदिक धर्म के अनुसार विवाह का मूल उद्देश्य ये है कि उससे हम अच्छी संतान उत्पन्न कर सके जो आगे जाके भक्त बने. So a family becomes actually successful when there are children. That is Vedic injunction. तो हमारे वैदिक धर्म में कहा गया है कि एक परिवार तभी सफल होता है अगर उसमें संतान हो. In the very same way, ISKCON as a society will become vibrant, will become alive, will become more meaningful when we have hundreds and thousands of Gurukul boys all over the world. तो ISKCON भी एक समाज के रूप में तभी ज़्यादा फलेगा, ज़्यादा फूलेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हजार हजार गुरुकुल छात्र विश्व के हर एक प्रांत में होंगे. Many may not know that many years ago, many centuries ago, here in India, there used to be over 7 lakhs Gurukula. बहुत लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि यहाँ पे बहुत सालों पहले बहुत गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत सैकड़ों गुरुकुल हुआ करते थे. A few minutes ago, one of our devotees mentioned that our goal is to establish 10,108 Gurukulas, but actually our goal is to re-establish 7 lakhs Gurukula. वैसे तो कुछ भक्तों ने पहले कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम 10,108 गुरुकुल करेंगे, पर नहीं, हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि हम 7 लाख गुरुकुलों को फिर से वापस लेके आएंगे भारत में. Hari Bol. So actually this is very much possible, and not only is it possible, it is absolutely necessary if we are to re-establish and revive our Vedic culture of Sanatan Dharma. तो ये सिर्फ संभव ही नहीं पर इसे करना पड़ेगा अगर हम अपने वैदिक सनातन धर्म को फिर से खड़ा करना चाहते हैं तो. The whole world is actually in total chaos due to actually having forgotten about and having rejected actually this eternal culture of Varnashrama Dharma. तो समग्र विश्व में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अशांति है क्योंकि हम हमारे वास्तव धर्म को भूल चुके हैं, इस सनातन धर्म को, वर्णाश्रम धर्म को भूल चुके हैं. We have a society today all over the world and unfortunately also becoming manifest here in India of Varna Sankara. और हम देख रहे हैं कि वर्ण शंकर की जो तादाद है वो सारे विश्व में एवं भारत में भी बढ़ रही है. Varna Sankara means that it is a society that is totally disorganized, that is totally, the individuals within that society are totally misdirected. और वर्ण शंकर का मतलब यह है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे
नागरिकों में जहाँ पे हर एक नागरिक अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है. From Varna Sankara, we have to revert and reintroduce as instructed by our founder Acharya Srila Prabhupada, we have to reintroduce that eternal, most natural, scientific system of Varna and Asrama. तो वर्ण शंकर से हमें, जैसे हमारे संस्थापक आचार्य ने हमें कहा है कि हमें वापस वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम ऐसी पद्धति में हमें वापस जाना पड़ेगा. One of the many important quotes given by Srila Prabhupada is the following. श्रीला प्रभुपाद के बहुत महत्वपूर्ण वचनों में से एक है That one of the purposes of our Krishna consciousness movement is to bring a complete overhaul within society. हमारे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक मूल्य उद्देश्य है कि समाज में एक पूरा परिवर्तन लाना. And to revert, Srila Prabhupada uses the word revert. Revert means to come back, to revert to the system of Varna and Asrama. और हमें वापस जाना है. प्रभुपाद ये शब्द यूज करते हैं कि हमें वापस जाना है वर्ण और आश्रम वाले पद्धति में. And it is very important to discuss, possibly tomorrow I'll elaborate a little bit more, how the whole Western culture, so-called culture especially, is actually a major deviation from what is meant to be the natural system as taught in our Vedic literatures. और कल हम इस बात पे और चर्चा करेंगे कि कैसे जो तथाकथित पाश्चात्य सभ्यता है वो हमारे वास्तविक सभ्यता से एकदम अलग है और एकदम अप्राकृतिक, अस्वाभाविक है. Actually, according to Vedic culture, the vast majority of young boys should not be in the school. They should actually be out grazing cows. और वैदिक धर्म के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार जो ज़्यादातर युवक छात्र है वो कोई पाठशाला में नहीं बल्कि बाहर वो उन्हें गोचारण करना चाहिए, ना कि पाठशालाओं में पढ़ना चाहिए बैठ के. This might seem like a controversial statement and it needs a little bit of explanation, but the reality is that unless and until we reestablish and revive what is called the agrarian village culture. Vedic culture is a village culture primarily. Vedic culture is a culture based on cows, land, and how to purify and elevate our consciousness. तो ये काफ़ी सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, पर हमें समझना पड़ेगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो मुख्य रूप से एक कृषि, गो एवं भूमि पे आधारित है और इन चीज़ों की हमें बहुत आवश्यकता है. Therefore, it begins, as was mentioned a little earlier, Vedic culture, the backbone of Vedic culture is actually Gurukula, which enables individuals to be trained in their Varna and Ashramas. तो हमने ये इस बात पे पहले भी चर्चा की थी कि जो गुरुकुल है वो वैदिक सभ्यता की आधारशिला है, जिससे एक छात्र को वर्ण और आश्रम पद्धति में सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. It is absolutely impossible. It is impossible to fulfill the mission of Srila Prabhupada without Gurukula. और गुरुकुल अगर ना हो तो श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं किया जा सकता. So, at present, there is a very concerted effort on the part of a number of devotees to actually introduce Gurukul in different parts of India, and I very much encourage everyone here to actually tomorrow we have some nice photo albums that we will share with you. I encourage everyone to give this very serious thought, especially those of you who are householders, grihastas, and who have children. Yeah.
तो हम हमारे बीच यहाँ पे बहुत सारे भक्त उपस्थित हैं जो जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत के हर एक प्रांत में गुरुकुल स्थापित किया जाए, और कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और आपको कई सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में विचार कीजिए। Vedic culture, Srila Prabhupada often he explained, is, and not only Vedic culture, but our ISKCON society, the International Society for Krishna Consciousness, is primarily an educational and cultural movement. और ये जो वैदिक सभ्यता है और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, यह मुख्य रूप से एक शिक्षा के लिए और सभ्यता को जानने के लिए है। Educational movement means that education which is given in Vedic literatures, Vedic education which begins with Gurukula. और शिक्षा का मतलब वो जो हमारे वेदों में पढ़ाया गया है, जिसकी शुरुआत होती है गुरुकुल से। And culture, educational movement and cultural movement. Culture means that eternal culture which is unchanging and which is based on eternal principles that we find in both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. और सभ्यता वो है जो कभी बदलती नहीं है, जो सनातन है और जो भगवत गीता और भागवतम में बतलाया गया है। So I'm very, very thankful and very happy also to see so many of our Gurukul boys who have come from different places, and definitely in the years to come we expect and we request your kind prayers for this to happen, but we expect that many more hundreds. We are actually looking for thousands of more Gurukul boys to get this wonderful opportunity to be exposed to our Vedic culture. तो यहाँ पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ इतने गुरुकुल छात्र को एक साथ देख के, और मैं चाहता हूँ कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाए ताकि वो जान सके कि ये वैदिक सभ्यता कितनी सुंदर चीज़ है। And tomorrow I will spend a little bit of time to explain about why I have, we could say, returned to Sridham Mayapur. I first came to India quite some time back, actually in 1976. And I was reflecting how Krishna is very kind. He first brought me in the early days to India, to Sridham Mayapur specifically, and somehow by some great fortune and great mercy on the part of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu, I am getting an opportunity to again come and spend some time here in Sridham Mayapur. तो जब मैं वापस मायापुर में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आया था मायापुर में जब नए कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई थी। बहुत पहले मैं मायापुर में आया था श्रील प्रभुपाद के आदेश से, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं यहाँ पे आके भक्तों के साथ समय बिता सकता हूँ। Actually, when I was in Sridham Mayapur, although I was going to villages quite extensively, the Namhata program, at that time, actually, I could not understand about Varnashram. और बात यह है कि जब मैं पहले मायापुर में प्रचार किया करता था, मैं ग्रामों में बहुत गया, पर तब मैं वर्णाश्रम के बारे में ज़्यादा कुछ समझता था नहीं। We had Gurukul, of course, at that time, and I was always very much appreciating the fact that some of these young boys were getting this very unique opportunity to be trained in our Vedic culture. हाँ, तब मैं गुरुकुल देख के ये सोचता था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ युवा छात्र ऐसे हैं जिन्हें इस वैदिक सभ्यता के बारे में सिखाया जा रहा है। But I'll just finish on this point by hearing Srila Prabhupada's lectures, by reading his books, hearing his classes, etc. By Krishna's mercy, over the years, somehow this whole idea and very important aspect of Prabhupada's mission of Varnasrama became more and more of a reality. Yeah. पर उसके बाद श्रील प्रभुपाद की कथाओं को श्रवण करके, उनकी किताबों को पढ़ के धीरे धीरे वर्णाश्रम
का जो महत्व है वो मेरे हृदय में कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से उजागर होने लगा. And a few days, maybe a few weeks ago, one devotee whom I knew when I was in Sridham Mayapur, so he's been around for many, many years, he told me, Maharaj, I only heard for the first time, like a month ago or a few months ago, I did not know about Prabhupada's 50% of his unfulfilled mission. I never heard about that. और एक भक्त ने बस ये 1-2 महीने पहले ही मुझे कहा है कि महाराज, इससे पहले मैंने प्रभुपाद का जो 50% बाकी जो काम रह गया है, उनका जो बाकी उद्देश्य जो उन्होंने अभी भी उनका जो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बारे में मैंने तो इससे पहले कभी सुना ही नहीं था महाराज. And I think possibly even here this evening, some devotees may still not know or understand this statement given by Srila Prabhupada, conveyed and recorded, that 50% of Srila Prabhupada's mission is actually to revive and re-establish Varnashrama Dharma. और मुझे ये बात भी पता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बात पता नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने जो कहा था कि मेरा आधा काम अभी भी बाकी है, वो आधा काम क्या है? वर्णाश्रम की स्थापना करना. And this was a very, very clear, very strong, often repeated desire of Srila Prabhupada, even in the very last days of his physical presence with us in Vrindavan. You can see the video, you can hear Srila Prabhupada's words, whereby he is again reminding and instructing that our movement will actually be successful. And Prabhupada just repeating what Srila Bhaktivinoda Thakur also previously mentioned, if we re-establish Varnashrama Dharma. और श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में अपनी अंतिम लीला में थे, तब उन्होंने इसी बात को बहुत बार दोहराया, और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसी बात की पुष्टि की थी कि वर्णाश्रम धर्म का महत्व कितना ज़्यादा बड़ा है. I'm looking at the time and I'm looking at the Gurukul boys. It's getting really late now, especially for Gurukul boys. So I will end here for now, and we hope to see everyone again tomorrow to share our thoughts and our experiences. Hare Krishna. तो अब समय हो चुका है और गुरुकुल के छात्रों को मैं देख रहा हूँ, उनके लिए तो और भी ज़्यादा देर हो रहा है, तो इसलिए अब मैं अपने बात को यहीं पे विराम देता हूँ. हम फिर कल चर्चा करेंगे. जय श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Excellence Bhakti Raghav Swami Maharaj ki. So you have a prasadam there, afternoon wherever you had. So tomorrow's schedule is follows. We'll have a translation. We have a first class translator. Give a big